font style tags also called as physical markup. Also called as physical markup. So the font style tags are bold, italic, underline. So these are the three tags which are called font style tags, also known as physical markup. Also known as physical markup. Now only one tag is left in your chapter, that is the font tag. Font tag. Font tag is a container tag. Font tag is a container tag. This tag is used to change the font style, color of the font, and size of font. So with the help of font tag, you can able to change the style of font, color of the font, and size of font. Font tag is a container tag. It is also a formatting tag. क्योंकि formatting tag क्यों है? क्योंकि हम with the help of font tag, we can able to change the color of the font, we can able to change the size of the font, as well as we can also change the style of a font. So the syntax of font tag is font tag open, और इसके बीच में आपके पास एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे. देन जो भी टेक्स्ट पे आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, so then close the font tag. Okay, the attributes of font tag are color, face, size. Color, face, and size. With this color attribute, you can able to change the color of the font. For example, font color, जो भी आप color का name देंगे. Then any text here, for example, your name, then font tag, close. Okay. Similarly, you can change the font style also. स्टाइल चेंज करने के लिए वी आर हैविंग द एट्रीब्यूट फॉन्ट फेस. फॉर एग्जांपल मुझे एरियल में अपना डेटा डिपिक्ट करना है, सो लाइक दिस. देन फॉन्ट साइज, you can give the size of a font like this. Now the value of size, the value of size attribute can be from 1 to 7. जो आप font का size set करेंगे, that is from 1 to 7. Okay, 1 is the lowest size of font, 7 is the highest size of font, and 3 is the default font size. अगर आप कोई भी size नहीं दे रहे हैं तो by default it will pick value as 3. That means font size as 3. That will be the default value. Okay, clear? The font tag is clear. So this tag is used to set the font style, font color, and size of the font. This is a container tag. This is a formatting tag. So you can format your document with the help of the color, face, and size attribute. Color attribute will set the color of the font, face will set the style of the font, size will set the size of a font. अगर आपको तीनों चीजें इकट्ठे लगानी है तो कैसे लगाओगे? Font, color, red, and if you want to give any size also, so size 4, like this. Simply you have to give a space in between the attributes and then you can write the next attribute in the same line. Okay, let's do one practice question here. Write down the question. Write the HTML code. Write the HTML code to display the text. Write the HTML code to display the text. Happy Lodi. Happy Lodi
in underlined, color green, size as 5, Vardhana font, and italic, and it should be in the center of the page also. So tell me what code line you will write here. So what you will write here? Hanji, speak out. Batao bachche, what line of code you will write in order to get the font equal to Hanji, font face is equal to Vardhana, okay. Font face Vardhana. color is equal to green. Color is green. Size 5. Font का size आपको 5 given है. Then give a space here. Size equal to 5. Next. I tag. I for underline. Sorry, C I for tag. italic. U for underline. And C tag तो कोई भी नहीं होता. It's center tag. I italic, U for underline and center tag. अंडरलाइन के लिए हमने U लगा लिया, कलर ग्रीन के लिए हमने फॉन्ट कलर ग्रीन लगाया, फॉन्ट साइज 5 लगाया, फॉन्ट फेस वर्दाना लगाया, italic, underline and center. Now what text I have to display? I have to display Happy birthday. Right? Then I will close the center tag, then close the U tag, then I, and at last we have to close a font tag. Clear? This thing is clear? Any doubt? No, ma'am. Question is clear, bachche? You have noted it? Yes, ma'am. Now let me show you the practically also a use of font tag. Okay, so yesterday we make index page. Okay, so I'm going to do the changes itself in this only. So firstly, I'm going to open the notepad for the coding. Okay, earlier, yesterday we applied the body background. Text color हमने maroon दिया हुआ है. यहाँ पे अगर आप body के अंदर text color set करेंगे, that means it will applied on whole of the HTML document. पूरे document पे जितना भी text आएगा, सबके ऊपर color maroon apply हो जाएगा. It will be for whole of the complete web page, right? फिर उसके बाद हमने H1 align equal to center लगाया, underline लगाया, underline के लिए हमने internet use किया तो उसमें हमारा वो चीज चल गया. Then we applied the P tag, then HR tags, right? फिर यहाँ पे हमने bold और center tag use करा है और हमने अपने स्कूल का name दिया. Now you can see यहाँ पे मैंने लगाया text equal to maroon. That means पैराग्राफ के ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर जितना भी टेक्स्ट आ रहा है सबका कलर क्या आ रहा है, दैट इज इन मैरून कलर. बट नाउ आई वांट टू अप्लाई द हेडिंग कलर, आई वांट टू चेंज द हेडिंग कलर पर्टिकुलरली. टेक्स्ट से तो देखो मैरून कलर आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर लाइन के ऊपर यू वांट टू चेंज द कलर, सो वी कैन डू अ यूज ऑफ फॉन्ट टैग हियर. मुझे सिर्फ इंटरनेट का ही कलर चेंज करना है, डोंट वांट कि रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट शुड बी चेंज. रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट का कलर मैरून ही रहे, लेकिन हेडिंग का कलर ग्रीन हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल राइट फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन. इंटरनेट आ गया यहाँ पे. ओके, एंड हियर यू हैव टू क्लोज द फॉन्ट टैग. यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आई विल क्लोज द फॉन्ट टैग, देन यू टैग क्लोज, H1 क्लोज. तो ये इतनी चीज मेरी सिर्फ हेडिंग के लिए बन रही है. देखो क्लियर? हेडिंग पे क्या क्या लगाया है, H1 अलाइन सेंटर, अंडरलाइन आ रहा है, फॉन्ट कलर ग्रीन लगा दिया, बीच में टेक्स्ट दिया, जस्ट सेव इट. दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द कंप्लीट वेब पेज विल बी इन द मैरून कलर, बट
the heading will be in the green color. तो heading के लिए मैंने separately एक font tag लगाया, जहां पे font tag बंद हो जाएगा उसके बाद उसकी properties बंद हो जाएंगी. मैंने font tag बंद कर दिया ना इंटरनेट के बाद, तो नीचे वाले में देखो मैरून कलर ही शो कर रहा है, लेकिन इंटरनेट पे ग्रीन क्यों लगा रहा है? क्योंकि मैंने इंटरनेट के पहले फॉन्ट टैग को स्टार्ट किया था और उस इंटरनेट के खत्म होते ही मैंने यहाँ पे फॉन्ट टैग को बंद कर दिया. दैट मीन्स दिस इज लोकल टू द ब्लॉक. लोकल टू द ब्लॉक मीन्स सिर्फ जहां जहां पे आपने टेक्स्ट लिखा है विद इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट टैग उतने टेक्स्ट पे ही आपकी प्रॉपर्टीज रिसाइड करेंगी. अगर आप बॉडी के अंदर टेक्स्ट कलर लगाएंगे वो पूरे के पूरे वेब पेज के लिए कलर सेट हो जाएगा. अगर आप पर्टिकुलरली एक लाइन के लिए कलर चेंज करना चाहते हैं तो इन बिटवीन आप कहीं पे भी फॉन्ट टैग के साथ पर्टिकुलर लाइन का कलर चेंज कर सकते हो. क्लियर? द फॉन्ट टैग इज क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट टू एनीवन? कोई भी टैग आपको ना क्लियर हुआ हो? हमने बॉडी टैग डिस्कस करा, हेडिंग टैग्स, पी टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एचआर टैग, सेंटर टैग एंड लास्टली वी डिड फॉन्ट टैग. एनी टैग यू आर नॉट क्लियर विद, आपको किसी भी टैग का मीनिंग नहीं पता चला या किसी भी टैग को लगाना कैसे है, कोई एट्रीब्यूट नहीं क्लियर हुआ, आस्क मी राइट नाउ. क्योंकि इसके नेक्स्ट चैप्टर में हमने टेबल स्टार्ट करने हैं HTML में एंड दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक. सो दिस इज द बेस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर यू कैन से. अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है तभी हम नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ पाएगा फिर. यस, एनी डाउट टू एनीवन? कोई भी टैग नहीं क्लियर हुआ जस्ट आस्क मी. All the tags are clear? सारे टैग्स सबको क्लियर है? Yes, ma'am. श्योर? सेंटर टैग दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ अ वेब पेज. मैंने यहाँ पे सेंटर टैग लगाया, ये देखो, और सेंटर टैग में जो भी कंटेंट में दूंगी एंड देन आई विल क्लोज द सेंटर टैग. व्हाटएवर द टेक्स्ट यू विल राइट इनसाइड द सेंटर टैग, द कंटेंट विल बी डिस्प्लेड इन द सेंटर. यहाँ पे स्वामी संदास पे हमने सेंटर लगाया था तो ये मेरा भी सेंटर पे आ रहा है. अभी ये बहुत छोटा सा आ रहा है तो हम इसका फॉन्ट भी सेट कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब सेंटर टैग लगा दिया, सेंटर के अंदर मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ फॉन्ट साइज इक्वल टू 7, राइट? देन क्लोज द फॉन्ट टैग हियर. अब देखो बन गया, बी टैग ओपन हुआ, सेंटर टैग ओपन हुआ, फॉन्ट टैग ओपन हुआ. Font tag close, center tag close, B tag close. Save it, refresh the page. Now this is font size 7. तो आप देखो इंटरनेट पे मैंने क्या लगाया, H1 लगाया हुआ है, हेडिंग लगाया H1. H1 का साइज भी स्मॉलर आ रहा है अगर मैं फॉन्ट साइज 7 सेट कर रही हूँ उससे. क्लियर होगी ना बात? आप फॉन्ट साइज लगा सकते हो, हेडिंग्स लगा सकते हो, तो दिस वे योर कंटेंट द साइज विल गेट चेंज, राइट? HR tag is also clear? So then let's move on to the exercises now. Let's discuss that. So the exercise is visible? Yes, ma'am. Let's solve it now. Okay. I hope you people have done that. So answer it. Yes. Dash tag breaks the line and displays the text from the next line. BR tag. BR tag. हाँ जी. BR tag. This is BR tag. The first one is BR tag. First answer is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There are dash heading levels in HTML. Six. Six heading levels are there. The dash tag is used to start a new paragraph. P. P. P tag is used to start a new paragraph. Dash attribute of the paragraph tag is used to align the paragraph right side.
Line right. Be a line Be a is line is right. equal to right. P align equal to right. Dash tag is used to change the background color of the web page. Body Body BG color. BG color. Body BG color. Dash is the extension of HTML document. HTML. Dot HTML. Dot HTML. The closing tag includes a Forward slash. forward slash. Tags are also known as Elements. 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 Okay. Kashish, repeat all the answers once again. Yes, Kashish, repeat all the answers. PR, Yes. second is 6, third is P tag, fourth is P align right, fifth is body BG color, sixth is dot HTML, seventh is forward slash, eighth is elements. Clear? Any doubt to anyone? All the answers are clear? Okay. Yes, Now next are the true false. The BR tag has a corresponding closing tag. False. 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 Why false? Because it's an empty tag. BR tag has no closing tag. BR is an empty tag. क्योंकि BR क्या है? Empty tag है. That's why. The title tag is given inside the body tag. False. Why false? It is a head. Because it is given in head. in head. It's given Heading in the tag. head tag. So that is why, again, second one is false. Top margin attribute is given within the body tag. True. It's true. Body tag का attribute top margin है. There are 4 heading levels in the HTML. False. So this is false as there are total 6 heading levels, right? The syntax to change the font color is font color equal to color name or code. True. This is supposed to be true, लेकिन यहाँ पे font और color में एक space आनी है. So this is false. क्योंकि font is a tag, color is an attribute. Tag और attribute में तो space होती है, right? So there should be space. यहाँ पे इन्होंने एक collective word बनाया, so that is why this syntax is wrong. Otherwise अगर space होती तो syntax correct होता. Empty elements has both on and off tag. False. Empty elements only contain opening tag, that is only on tag. So this is false. HTML stands for hypertext markup language. True. True. HTML file can be saved with any extension. False. It is false. HTML files can only be saved with dot HTML. HTML. Okay, repeat the answers. Hurry up. First, False. second, False. third, True. fourth, False. fifth, False. seventh. True. Seventh is true. Eighth one, False. false. Now on to the application based questions. Rashmi has made a web page using HTML. She has saved this file as a text document but cannot view it through a browser. So help her to rectify the error. HTML. रश्मि ने एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन वो उसको सेव एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर रही है और इसीलिए उसकी ब्राउजर में विंडो ओपन नहीं है, ओपन हो रही है. So that means उसकी एरर क्या है? She is not saving the file with .html. So what she has to do? She has to save a web page using .html extension. She has to save the web page using .html extension. Clear? Yes, ma'am. Second, Bharti wants to set the background color for her HTML document. Which tag you will suggest her to use?
body BG color. body space BG color equal to color name. Write down the full code. एक लाइन पूरी लिखोगे. Body BG color equal to color name. Ashima has created a project in HTML. She wants to show each sentence of her project from a new line. Suggest her the tag. BR tag. BR tag, because BR tag will shift the line to a next line. Okay, so the answer is BR tag. MCQs, which element is used to emphasize the text? Bold. Bold tag. It's bold tag. Dash tag breaks the line and display the text from the next line. BR. C part BR tag. Tags are of dash types. Two types. Two types. Font style tags are also known as Physical markup. Physical markup. HTML is an improved version of HTML. Which of the following tag displays the text in italics? I tag. Okay, the first answer bold, second BR, third 2, fourth physical markup, fifth HTML, sixth I tag. Okay, clear? Yes, ma'am. Now the question answers which are to be done on the fair notebook. Question number 1, what is HTML? What is HTML? Design web contents for internet. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a complete code package that allows a user to create web pages. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a complete code package that allows users to create web pages. What do you understand by tags and how many tags are there? Yes. Answer for the A second tag question. is a piece of Mhm. code which acts as a label that a web browser interprets. Correct. Tags are of two types, empty Container and and container. right. So tag is a piece of code which acts as a label that a web browser interprets. Tags are of two types, container tags and empty tags. Container tags and empty tags. First two questions are clear. Any doubt? Second repeat कर दो. Anji, who will repeat the second question? Tag is a piece of code which acts as a label that a web browser interprets. Tags are of two types, container tag and empty tag. It is a piece of code which acts as a label that a web browser interprets. Okay. Clear as second question? Third, differentiate between container and empty tag. Firstly, ये question आपको line लगा के करना है. You have to make a center line and 2 points. हाँ जी बताओ. What are container tags and empty tags? Container tags have both opening and closing tags. Empty tag only have the opening tags. Second point of difference. Container tags are also called paired tags. Okay, first you will write the meaning. Container tags are the tags which are having both opening and closing tag. Empty tags are the tags which are having only opening tag. Second difference, container tags are also known as paired tags. Empty tags, the other name of empty tag is void tag. Third difference, you will write the examples of container tag. HTML head, body, title और empty tag के examples मैंने आपको लिखवाई है ना पहले discussion के time पे. IMG, BR, HR and link. 4 example आप container tag की दे दो और 4 examples you have to give for the
empty tag. तो 3 difference point आपके बनेंगे इसमें. Okay, firstly you will write the meaning of container and empty. Second point, it is also known as paired tags. It is also known as void tag. Third difference, you have to tell the examples of container and empty, right? What do you understand by attributes in HTML? An An attribute is a attribute property is a that property provides that additional provides information additional information about HTML elements. Correct. An attribute is a property which provides additional information about the HTML element. तो पहले आप attribute का meaning लिखेंगे, उसके बाद आप syntax भी देंगे. Syntax क्या होता है? Body BG color equal to red. BG color को arrow डाल के क्या लिखोगे? Attribute. जैसे मैंने डिस्कशन के टाइम पे ब्लैक बोर्ड पे समझाया था ना, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड, तो बीजी कलर को एरो डाल के डालो दैट दिस इज अ एट्रीब्यूट. ठीक है, पहले आप एट्रीब्यूट का मीनिंग देंगे, देन यू विल राइट वन एग्जांपल शोइंग द एट्रीब्यूट नेम. एक्सप्लेन द p tag and its attributes. हाँ जी, बी क्विक बच्चे, द टाइम इज रनिंग. एक्सप्लेन द p tag and its attributes. Paragraph P tag tag is used to start a new paragraph. Right. To create P tag paragraph. is, P stands for paragraph tag. It is a container tag that is used to start a paragraph, that is used to display the text in a paragraph form. आप कुछ भी दे सकते हैं, both are correct. Paragraph tag is a container tag which is used to display the text in a paragraph form. The attributes of P tag are align. एक ही attribute होता है, align. Okay. Till you have to write the syntax of the p tag. Then उसके बाद you will tell p align equal to center, p align equal to right, p align equal to left, p align equal to justify. और आगे आगे उनका describe करना है. Center means aligns the text to the center. P align right means aligns the text to the right side. P align equal to left means aligns the text to the left side. And similarly P align equal to justify, उसका meaning आप describe करोगे. It is given as it is in the syntax of p tag. Firstly, you will tell p tag is a container tag which is used to display the text in the paragraph format. The attribute of p tag is align. फिर syntax में ही आप इसके attributes को explain कर दोगे like it's given in the book only. ठीक है, as it is syntax आपने वहीं से same. पहले p tag starts a new paragraph. P align equal to right, p align equal to left. इसी accordingly, then you have to explain it also. What is the significance of BG color attribute of body tag? To set background color of the document. To set background color. Of the web page. BG color attribute is used to set the background color of the web page. Then इसके बाद नीचे example भी दोगे. Body BG color equal to green. Clear? Firstly, you will write the significance of BG color and then you will give one example of one line code. What is the significance of BR tag? Line break tag displays text in a new line. So text in the next line. It is used to Firstly- break the line, the text from line. Correct, correct. Firstly, you will write BR tag stands for line break. पहले सेंटेंस में आपकी फुल फॉर्म आ रही है, stands for line break. It is an empty tag. It is an empty tag. This tag breaks the line and displays the text from the next line. MCQ का ही second given है ये तो. अभी आपने MCQ में भी करा है ना ये same point second part. BR stands for line break. It is an empty tag. This tag breaks the line and displays the text from the next line. Which tags are used to apply the bold, underline, and italic properties to the text? B tag, I tag, U tag. B tag is used to apply the bold property. U tag is used to apply the underline property. I tag is used to apply the italic property. And all the three tags are categorized as font style tags. पहले आप तीनों का बताओगे. B for applying the bold effect, U for applying the underline, I for applying the
italic, and these 3 tags are collectively categorized as font style tags. Last question, which attribute of body tag are used to set the margins in a web page? Right margin, bottom and top. Right margin तो हमने कोई भी नहीं किया. Left margin, top margin, top margin. So the attributes of body tag which is used to set the margins in the web page are: number 1, top margin to set the margin from the top side, left margin to set the margin from the left side. Okay. 2 attribute use होते हैं margin set करने के लिए, top margin and left margin. Left margin to set the margin from left side, top margin to set the margin from the top. Any doubt in any of the question? किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो? All the 9 questions are clear? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. हो जाएंगे नोटबुक पे. When you are going to submit me the notebook? Today. Okay. So also send the index page along with your notebook page. Okay. You have to scan the index page also. जब आप अपनी PDF create करेंगे तो आपको index page भी scan करना है बीच में. So complete the notebook and send me for checking. Ma'am, index भी? हाँ जी, index page भी send करना है.